करणारा या देशातला एकमेव नेता आणि राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि म्हणून आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर, उन्हीं के आदर्श पे हमारी सरकार भी हम चला रहे। मैं जब मुख्यमंत्री था, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हमारी टीम काम कर रही थी। मुख्यमंत्री है, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं और एक ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आदर्श को चलने का काम हम कर रहे हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश का कारोबार भी छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श हमें फक्र भी है, अभिमान भी है। सुराज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय आणि म्हणून यासाठी आम्हाला अशीच या ठिकाणी प्रार्थना आहे आणि अपेक्षा है। आज विज्ञान और तंत्रज्ञान तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी के वजह से नई नई तकनीकें सामने आ रहे हैं, उसका सीधा असर हमारी जीवन शैली पर पड़ रहा है। नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देना ये चैलेंजिंग होते जा रहा है। वर्तमान समय में लीडरशिप और गवर्नेंस का बहुत बड़ा महत्व है, उसी का इम्पोर्टेंस है। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते वक्त एक अच्छे नेता को भी संवेदनशील होना जरूरी है, सेंसिटिव होना जरूरी है। लीडरशिप और गवर्नेंस ऐसे दो स्तंभ है जिसपे समाज की प्रगति निर्भर है। एक सच्चा नेता सिर्फ शासन नहीं करता, वह इंस्पायर करता है, इनोवेशन करता है और चेंज भी लाता है। सुशासन का मतलब भी ट्रांसपेरेंसी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस है, यही है। और एक लीडर के पास 5 गुण आवश्यक होते हैं: कर्तव्य निष्ठा, पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजन एंड अवेयरनेस, और उसी के साथ क्रेडिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। गवर्नेंस होता है किसके लिए? आम आदमी के लिए होता है। और हम कहते हैं कि हमारी सरकार, मराठी में हम कहते हैं सर्वसामान्यांचं सरकार, सामान्य नागरिक की सरकार, आम आदमी की सरकार। और इसीलिए ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि लीडरशिप और गवर्नेंस किसे कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश में गवर्नेंस के युग की शुरुआत की है। उन्होंने प्रशासन को आधुनिक चेहरा प्रदान किया है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। हम पहले देखते थे भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे, सब कई लोगों ने अच्छा काम किया, कई लोगों ने हमारे भारत देश को आगे बढ़ाया। आज के जमाने में हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं, हर किसी देश में जाते हैं, तो हमारे देश का सिक्का वहां जमा के आते हैं। हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ये भी कहूंगा मैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 5वें नंबर पे आई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है हम 3रे नंबर पे लाना चाहिए, और वो भी जरूर होगा। और मैं ये भी कहूंगा मिलिंद जी, उसमें हमारे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान भी होगा, कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का भी होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के काम पर हमें गर्व महसूस होता है, उनके नेतृत्व पर भी हमें गर्व महसूस होता है।
और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ा हूँ, कार्यकर्ता बनकर आगे आया और एक कार्यकर्ता से लेके इस राज्य का मुख्यमंत्री भी बन गया मैं। कई मंत्री पद भी मुझे मिले, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के बाद एक ही विचार हमारे सामने था, हमारी टीम हम बना के हम काम करें, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य की प्रगति करेंगे, इस राज्य के हर वर्ग को हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे। वो आम आदमी हो, व्यापारी हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, इंडस्ट्री हो। आज कितना हम देखते हैं, राज्यपाल महोदय जी भी हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, उनका भी ब्लेसिंग हमारे साथ है। धनखड़ जी भी महाराष्ट्र का हमेशा कभी कार्यक्रम होगा तो हमारे उपराष्ट्रपति ना नहीं कहते, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज हमारा राज्य जो है, ये महाराष्ट्र एक इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ, लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, ह्यूज पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, मैन पावर सब कुछ है हमारे यहाँ पर। आज लोग महाराष्ट्र को पसंद करते हैं। पिछले कई सालों में अगर जाएंगे हम तो परिस्थिति उस पर मैं कुछ आज बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब से आम आदमी की सरकार, सर्व सामान्य लोगों की सरकार जब से आई है, तब से इस राज्य की प्रगति हुई है। और $1 ट्रिलियन का हमारा भी गोल है। निश्चित रूप से हम उपराष्ट्रपति जी, आपकी जो अपेक्षा है उससे कई आगे जाकर हम, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का गोल है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस गति से काम हो रहा है और तेजी से इसके आगे हम काम करेंगे, ये हमारी पूरी टीम है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आम लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात प्रयास करना, यही हमारा काम है। और मुरली भाई भी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे लोगों के सच्चे सेवक थे। मुंबई के विकास के लिए उनका डेडिकेशन और डिवोशन हमने देखा है, और हमेशा पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने संबंध रखे। वे अजात शत्रु थे। मुरली भाई कांग्रेस में थे, उस समय भी, उस समय की कांग्रेस अलग थी, मैं कुछ बोलना नहीं, क्योंकि ये तो मिलिंद हमारे साथ नहीं आता ना। अरे बाबा, वो अपने ही लोग हैं सर, वो अब पराया थोड़ी है। मैं देखा अमीन भाई वगैरह सब इधर देखे मैंने। अभी अशोक चौहान सामने बैठे, लेकिन वो अभी हमारे साथ में है। तो जो नहीं है वो भी आएंगे हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, राजनीति से परे होकर हम काम करते हैं। देवेंद्र जी देखो, मैं देखो, हम देखो, हमारे दूसरे साथी अजीत, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो सिर्फ चुनाव में होता है, उसके बाद नहीं होता है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, यही हमारा एजेंडा है। अच्छे सब लोग जुड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिलिंद देवरा, बहुत से लोग मुझे मिलिंद कहते हैं कि आपने सही काम किया है, और आपको भी कहते होंगे आप सही आदमी के पास गए हो। और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश की सेवा की यात्रा पे निकले और देश के विकास की यात्रा में आप भी शामिल हो गए। ये भी छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बात है। और इसलिए मैं मिलिंद को भी धन्यवाद दूंगा। मुरली भाई राजकारण कम करते थे, लेकिन लोगों को मदद ज्यादा करते थे, सेवा भावी वृत्ति उनकी थी, और इसलिए प्रसिद्धि से दूर रहकर काम करना। अभी थोड़ा माहौल चेंज है, पहले का समय अलग था, अभी का समय अलग है। अभी तो मीडिया को बुलाना नहीं पड़ता है, वो मीडिया पहुंच जाती है। बाकी कुछ बोलना नहीं चाहता हूं मैं।
कुछ सुबह वाली बात होती है, कुछ दोपहर वाली होती है, कुछ दिन भर वाली होती है, लेकिन हम लोग, हमारा काम है डेवलपमेंट, फिर भी मैं कहूँगा। तो मुंबई कारपोरेशन के वो नगर सेवक भी थे, मैं भी नगर सेवक था, सामने नगर सेवक से मैं मुख्यमंत्री बना, वो केंद्रीय मंत्री बने, महापौर भी बने। वो महापौर बनने के टाइम मुझे याद है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने उनको ब्लेसिंग दी थी, आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वो कहते थे मुरली भाई जो है हमारे मुंबई के दामाद है, तो इसलिए बाला साहब ठाकरे जी जो दिल से करते थे, जो भी है उनका दिल से होता था, और पेट में कुछ ओट में कुछ ऐसा नहीं, बहुत ही खुली किताब थी। और इसलिए हम उनके विचार को आगे बढ़ा रहे, राज्य में उनके विचार आगे ले जा रहे हैं। इसलिए जो 2.5 साल में हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, इस जो काम किया, इतना काम किया, इतने निर्णय लिए, इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, इतनी वेलफेयर स्कीम्स की। तो आपने कहा अभी, उपराष्ट्रपति जी ने मुझे आते आते कहा कि पूरे देश को आनंद मिले ऐसा काम आपने किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सर्टिफिकेट आपका है, क्योंकि लैंडस्लाइड मैंडेट ऐसे नहीं मिलता, काम की वजह से मिलता है, डेडिकेशन डिवोशन की वजह से मिलता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा की हेमाताई, आपल्याला पण मी म्हणजे आपल्या मुलींच्या आई हंसळकर आणि तसं आपलं नातं जे आहे, आता तर अगदी घट्ट झालंय, पण अगोदरही होतं। बाळासाहेब मुरलीबाईंना खूप मानायचे, आणि म्हणून 77 ला ते महापौर झाले, आणि शिवसेना आणि मुरलीबाई यांच्यातले हे प्रेम शेवटपर्यंत कायम होतं। आणि मुरलीबाईंचं आणि बाळासाहेबांचं त्याचंच री ओढली मिलिंदनी पुढे, आणि मग ते मिलिंद देखील शिवसेनेबरोबर आला, त्यामुळे आता चांगलं काम करतोय मिलिंद। थोडं त्याला नवीन वाटत असेल, पण यहाँ पर मैं एक कोट कहूंगा, रोनाल्ड रेगन का मशहूर कोट मुझे यहाँ कहना है, द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन who does the greatest things, he is the one that gets the people to do the greatest things। हमें इसी राह पर चलना, सबको साथ लेके चलना। कोई अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब साथ में सब साथी होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी बात कहूंगा मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवा बनते गया, लोग समझ साथ में आ गए। वैसे आपके पिताजी का था, और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, मजबूत भारत के निर्माण में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका अहम रहेगी। एक तरफ व्यापार को अनुकूल वातावरण बनाते हुए, दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी हमने बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार ने प्रशासन, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए है, जिसमें ई गवर्नेंस सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करना, पर्यावरण संरक्षण पर हमने जोर दिया है। ईमानदारी, सेवा और प्रगतिशील शासन, इन मूल्य पर हम गवर्नेंस करना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस की इस यात्रा में आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम सभी ऐसे नेता कार्यकर्ता बनने का प्रयास करें जो प्रेरणा दे, ऐसे शासन की स्थापना करे जो सशक्त बनाए, देश को सशक्त बनाए, तथा ऐसे नागरिक बने जो हमारे राष्ट्र की महानता में योगदान दे। मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजक मिलिंद को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका प्रेम ऐसे ही बरकरार रखिए,
और आपके साथ आपका भी स्वागत मैं करता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय जी तो हमारे पीछे खड़े ही है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. With that, now, ladies and gentlemen, I'd like to invite Shri Jagdeep Dhankarji, Honorable Vice President of India, to enlighten us with his thoughts. Good evening, all of you. Honorable Governor Maharashtra, Sri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Sri Eknath Shinde ji, ladies and gentlemen, we had such a feast, both of governance and leadership. Shinde ji, you have stolen the thunder. I am wondering struck whether I can add anything. I may only repackage it. I recall every moment I spent with Sindhji, but more when me and my wife went to his residence and had the good fortune to perform puja. His address is remarkably relevant, full of depth, assessment of contemporary scenario and challenges. He speaks of his final experience he has gained from worker to leader. And a leader is always a leader. It doesn't matter in cricket team you play at which number. I am absolutely elated and unreached that a leader has such sacrificial attitude. My congratulations to you. We have amongst us Srimati Hema Deodaji. I was greatly touched because she is privy to the hand holding which I received as a young parliamentarian from Shri Murli Devraji. I was elected to parliament in 1989, and that was a big change. Congress had lost power, and I was a union minister. He was a congressman. He took me to then Bombay, now Mumbai, to Kolkata, and held me and introduced me to people who matter in industry and in Marwadi community. When she revealed this briefly, I had vivid recollection of those days. A man of sterling qualities, Murli Devraji. Man, your presence matters to us. And I am sure you will have the good occasion to see your son perform in Rajya Sabha. Eknath Shinde has sent a jewel to Rajya Sabha. He marks his addresses with due diligence, thorough study, calm and composed. I am sure you will be in Chairman's gallery to upload him someday.
We have amongst us distinguished members of parliament, though the audience is absolutely very eminent, and each one of you matters to me hugely. But I don't believe in taking risks, and therefore I must recognize presence of members of parliament. One on the dais, Sri Milind Devaraj, a stalwart of politics in the state and the nation, Sri Ashok Chauhanji, Sri G.K. Vasanji, whose father had handheld me in a similar manner as Murli Devaraj. Young, energetic, youthful, but in third term, Srikant Sindhji. I hope I don't miss any parliamentarian, otherwise I may suffer at their hands. Sri Raghvendra Singh, President Kotak Mahindra Bank. He is energy capsuled, has great administrative capacities. But what I gather from him, having known him for the third generation, is full of positivity. I must recognize presence of some who are present here. Sri Ashok Hinduja ji is here. We have Sri Uday Kotak ji. I'll come to Amrita ji a little later because I'll have to. She is much beyond the spouse of the Chief Minister for me. Right. His Holiness Sadhana Sahab ji, Sri Gorang Das, Sri God Gopal Das, they both are from ISKCON. People in industry, Sri Parna Vadani, Sri Neeraj Bajaj, Dr. Panda, Mr. Jalas Dani, and let me tell you, everyone who is present here, I am greatly indebted. But never miss a journalist if he is your friend. You may suffer at his hand forever. I am referring to none other than Sanjay Pugalia, whom I know him for more than 4 decades. We had such a wonderful cricket match, and India is in finals. So why not remember Surya Kumar Yadav? He is known as Mr. 360 degrees. Now, Amrita ji. Amrita ji, you have created a problem for me. Because of a condition I set for Devendra Fadnavis, that I will receive him at Uprashtrapati Niwas only if he is accompanied by Amrita ji. Every time in next excuse, please ensure. I would love to receive both of you at Uprashtrapati Niwas, where I have had the great occasion to receive Shinde ji. After having listened to Eknath Shinde ji, the essence of the lecture is already before you. Because he is not academic. He has spoken out of experience, exposure. And more importantly, delivered. Delivery matters. The humility and modesty reflected by him is quite a sense of leadership quality. Whatever be your position in the team must win.
the object must be accomplished. Now, ladies and gentlemen, I come to the inaugural lecture. It is an absolute honor and privilege to deliver the Murli Devda Memorial Lecture Dialogue, dedicated to one of the finest public figures in politics, who nurtured all his life friendships. He bridged differences and was loved by all. In his life, he missed one thing. He had no adversaries. That was his stature. Murli Bhai, as fondly reminisced by his peers, exemplified public spirit and dedication to worthy societal causes. He was a statesman in the mold of a politician, a rare blend of foresight and pragmatism. From being the youngest mayor of Bombay, now Mumbai, to serving 7 terms in parliament, he showed deep commitment to democratic values and public service. His belief in dialogue, debate, discussion, deliberation, consensual approach, cooperative approach, coordination are being missed now. Murli Devdaji will always be remembered for his proactive efforts to save the country from the hazards of smoking. He approached the highest court of the land, sought affirmative intervention to secure a ban on smoking at public places. Life of Murli Devdaji was a testament to the idea of leadership, that this idea is not a pedestal but a pilgrimage, a journey of service to the last, the least, and the lonely, very effectively projected before all of you by Shri Eknath Shinde. I commend, ladies and gentlemen, Milind Devda, a senior parliamentarian, former union minister, and his friends for organizing this annual feature as a befitting tribute to Murliji. The theme, leadership and governance, is indeed thought-provoking, as also of huge contemporaneous relevance. Bharat, home to 1/6 of humanity, is the oldest, largest, and most vibrant and functional democracy. Ladies and gentlemen, Bharat is the only country in the world that has structured democracy, structured by constitution at the village level up to the national level. Ladies and gentlemen, first I seek to focus on the source of governance in democracy. Our constitution's preamble indicates we the people as the foundational source and premise of governance. Preamble of the constitution also reveals purpose of governance being justice, equality, fraternity for all. We must appreciate the contours of we the people, the ultimate repository of sovereignty. A sovereignty which we cannot afford either to dilute or to be taken away. We the people, through electoral platforms, constitute parliament, legislatures,
The sanctity of this repository of sovereignty is essential for democratic governance. Imagine what will befall us if we are deprived of our sovereignty. The integrity of we the people in the present times is being stressed and challenged. And the challenge is surfacing in multiple ways. Leadership faces a daunting task to preserve and sustain this. Let me advert to some worrying trends. There are many, I am referring only to some. The nation houses millions of illegal migrants, causing a demographic upheaval. Millions of illegal migrants are in this country, making a huge demand on our health services, education services. They are depriving our people of employment opportunities. Such elements have alarmingly secured electoral relevance in some areas, and their securing electoral relevance is sapping the essence of our democracy. Emerging dangers can be evaluated through historical reference, where nations were stripped of their ethnic identity by similar demographic invasions. As a matter of fact, there are countries where demographic invasion resulted in complete eclipse of ethnicity, where ethnicity was in complete majority. Ladies and gentlemen, this malaise, far more severe than COVID, is aggravatingly intersected with conversions through allurements, with vulnerable sections trying to be trapped, the marginalized, the tribal, the weaker become easy prey to these temptations and allurements. Faith is your own. Faith is dictated by conscience. Indian Constitution gives freedom of faith. But if this faith is held hostage by temptations, allurements, by making prey of those who are in need, it, ladies and gentlemen, according to me, defacing freedom of faith. The concerning objective behind these pernicious designs is to detrimentally vary and ultimately eclipse we the people identity and secure for themselves vegetarianism position. I am sure no one will disagree. This danger has to be thwarted. This is too serious an onslaught to be either countenanced or overlooked. Just reflect for a moment the change that has taken place in our demography in last 2 decades. Look at some of the areas where impregnable fortress has emerged. I am sure this is a challenge that needs urgent attention. Preservation of pristine integrity of we the people is fundamental to preserving our national identity and culture. Our very existence is at stake if this is not addressed in the right perspective. This menace has potential to emerge as existential challenge and concern to the oldest civilization. Foundations of our culture will be uprooted. National mindset must converge to secure sanctity of we the people.
We must work hard to persuade our people to be in the right mindset, to appreciate the challenge, inflame in them a desire to secure the sanctity of we the people, and generate a governance environment that is nationalistic. This very simply strains inclusivity that defines Sanatan over millennia. Look at our historical perspective, our journey of thousands of years. It has always been inspired by a fundamental inclusivity. The power of we the people cannot suffer any sacrilege or dilution. Leadership must engage in overdrive, generating national consensus to preserve the sanctity of we the people and work in togetherness, in tandem, to neutralize all misadventures against it. Ladies and gentlemen, our wars and wars don't end here. With demographic disruptions and conversions. Organic evolution of demographic character is acceptable, not only in our country, the world over. But when it is different, with ulterior motivation, threatening our very existence, we need to be alive. But the other aspect is, we the people faces onslaughts from within and without, forces inimical to Bharat, have converged to systematically weaken our nationalistic spirit. Constitutional institutions face orchestrated public ridicule as part of political strategy. Even the presidency isn't spared, tarnishing institutions, tainting high constitutional offices, especially on foreign land, is against our culture, is against our national interest. Every citizen has the power of social media. I beseech everyone in the interest of this country to be alive to these trends and make contributions. Anti-national narratives gain evilly inspired momentum. Misinformation aimed at destabilizing the nation is rising. We had the painful occasion to see it during COVID. The pandemic that shook the world, then a nation of over 1.3 billion faced it by innovative mechanisms initiated by the private sector. And it was successfully handled. The entire global fraternity has applauded Bharat, gone to the extent that Bharat, while tackling pandemic at home, lent assistance to 100 other countries. But some amongst us did not spare any effort to run us down. Such category of people who are recipe for chaos need to be exposed. Leadership must navigate this challenge through citizens' mindset response. Friends, Bharat is global beacon of inclusivity and thrives with unity in diversity. This calls for all to prioritize nation first. Commitment to nationalism marks freedom and democracy. No interest, partisan, economic, or personal, can justifiably be the ground to compromise national interest. Ladies and gentlemen, on issues of constitutional clarity,
where the Constitution is categorical. Our founding fathers have given us the path on issues like language, common civil code. Seeds of dissension are being sown. The response of the government emanates from constitutional prescriptions. We have to work in overdrive to see that these issues that are premised on our constitution are not politicized to the detriment of the nation. Leadership must seek national consensus and public awareness to sensitize people of